ऑन हो गया। हम्म, हम्म, हम्म। ये ठीक रख दिया सर लेफ्ट से। रख दिया, उधर ही रख दिया। आवाज चेक करने को। So yeah, hello. Hello, mic testing. Is it? Okay. Good afternoon to all of you. There's कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी किसी वजह से, तो लेक्चर को बीच में रोकना पड़ गया था. But just I'm going to recall this I have discussed in the last lecture. It is operating range, as I told you in the previous lectures, that we are not able to operate our column at either at very high velocity of the vapor or at a very low velocity of vapor, and also same is for the liquid as well. And that is the reason we are going to see on the screen. That is your operating range or satisfactory range for the operation. It means when, as you are going to see, this line is, this is called coning. Coning means when the vapor velocity is high but liquid velocity is low, is too low, and the vapor velocity is very high, that will leads for the coning. Weeping is there when the vapor velocity is moderate to low but liquid velocity is too low. This is called as weeping. And down go back up opposite, I told you that when the vapor and liquid fluids are high, liquid rate is high और vapor rate is high, दोनों केस में क्या होगा, बैकअप फ्लडिंग होगा. Interment, when the vapor velocity is high, liquid is have low velocity, then what happened, the interment is there, and obviously our excessive interment will leads for the flooding as well. So we are not able to operate our fluids of vapor and liquid beyond that region. We are only bound to operate our region in this region, and this is your satisfactory region for the operation. Clear? Now, and thereafter I told you what is the procedure for designing the a trial and error approach we are going to use here. A trial and error approach is necessarily in the plant design, starting with the rough plate layout and checking our key performance factors, and then revising the design if necessary. तो सबसे पहले हम कुछ वैल्यू को एज्यूम करेंगे ट्रायल की तरह पे, और उसके बाद से हम एक प्लेट का लेआउटिंग करेंगे. प्लेट की लेआउटिंग मीन्स what should be the diameter of the plate, what should be the holes diameter, and what should be the number of holes or perforation area, all the things, and what should be wear height, what should be the wear length, all the things. Now the procedure is here. The first of all we have to calculate, that I told you, first of all from the given data of the feed and all the things, we are able to calculate the maximum and minimum vapor liquid flow rates. Means maximum and minimum vapor and liquid fluids we are able to calculate by the data given in the problem. I will show you problem. So first of all we have to calculate the V and L
for rectifying, and V bar and L bar for the vapor and liquid fluid in the stripping section. It means first of all we have to calculate the vapor and liquid fluid in the column. Thereafter we have to collect or estimate the system physical properties. System physical properties means density and surface tension, density of liquid, density of vapor in rectifying and in the stripping separately, because pressure and temperature in the rectifying and pressure and temperature in the stripping will be different. Okay, reason is that because at the top temperature is low and at the bottom temperature is high. And as pressure is concerned, if the column is going to operate at a very high pressure, or suppose atmospheric pressure, then the atmospheric pressure is at the top actually, but at the bottom of the column the pressure is not atmosphere. The pressure is atmospheric pressure plus whatever pressure drop from each plates, all has to be count, and then it has to be add all the pressure drop in the across the number of stages. We have to add in the atmospheric pressure, then we are able to calculate the pressure at the bottom. And on the behalf of pressure and temperature, we are able to calculate the density of liquid and vapor mixture. So second step is we have to calculate find the properties. Third step is select a trial plate spacing. So here we are going to assume trial. Trial means it is assume. We are going to assume the spacing of the plate. And once the plate spacing is assumed, you know very well, we are able to calculate the diameter of the column. All the things I have discussed in the last lecture, last also. How? As a plate spacing, because I told you there is a curve in between KV and here it is ordinate, it is abscissa, it is your KV and it is your L upon V root of rho V over rho L, and as a parameter of plate spacing. And formula for calculation of maximum velocity of vapor is kV under root rho L minus rho V upon rho V. So by knowing the value of kV and the density of liquid and vapor, already we have assumed we are able to calculate the maximum velocity of vapor, either in the stripping or in the rectifying section, depending upon the what property we are going to use here. And thereafter we are able to calculate diameter. How? As V bar equal to rho into area into operating velocity, and as we have calculated the maximum velocity, then operating velocity will be somewhat less than the flooding velocity, and density of vapor is given to you, and molar fluid already we have calculated in the first step. Then we can calculate the area, and once the area we are able to calculate, then we can also calculate the diameter of the column. So third step is trial the plate spacing, and thereafter estimate the, and why plate spacing is required in order to calculate the value of kV. Okay, and thereafter estimate the column diameter. I told you based on the flooding consideration, all the things here, and thereafter decide the liquid flow arrangements. What types of liquid flow arrangements should be there over the tray? That is going to decide on the behalf of liquid fluids and the diameter of the column. That's why it is very important to, it is a clue. If you want to find out the liquid flow arrangement, I will show you in the next slides that in order to find out what types of arrangement of the liquid over the tray deck should be, that will depend upon the fluids of the liquid and the diameter of the column. So there are basically three types of pattern is there. One is called as cross flow, also called as single pass flow, and second is called as double flow. Okay, these types of flow is there, and these types of flow will depend upon the liquid fluids and diameter of the column. That's why before this step, before calculation of the liquid flow arrangement, it is important to calculate the diameter and liquid fluids. And to calculate the diameter, we should know the plate spacing. That's why we have to assume the plate spacing. And to calculate the diameter also, we should know the properties of the fluid, like density of the liquid and vapor. Now, and the sixth step is the make a trial plate layout. It is also very important
the third and sixth step is very important because it involves the trial and error value, because it has to be assumed. In this step we have to assume something. So in the first step we assume the plate spacing now, and in the sixth step we are going to assume the tray plate layout. In the tray plate layout, it means downcomer area we have to assume. We have to assume the active area, we have to assume the whole area, whole size, wear height. That depend upon the experience, that depend upon the previous design values. What should be the range of wear length, what should be the range of wear height, what should be the range of holes, what should be the range of downcomer area, all the things. So that is the only trial plate layout, means not confirm, it is only trial value. And if trial value will give the satisfactory performance of the column, then this trial value will be final value. Okay, now once we have selected the downcomer area, active area and whole area, all the things, or you can say in short form plate layout, then we will go for the calculation of weeping rate. Weeping rate is the also called as weep rate. It is a minimum flow rate of vapor flowing through the column, and if the flow rate of vapor is just lower than this, then what happens, the liquid from over the tray deck will going to weep out, weep down actually, and that is called as weep rate. And the velocity, operating velocity of vapor must be more than the weeping velocity. That's why it is very important to have an idea about what is the minimum velocity of vapor could be for the given operation. So we will check for the weeping rate, and if operating velocity is equal to or less than the weeping rate, then obviously we will go for the step number 6. In step number 6, we will further change our all the plate layouting condition, plate layouting parameters, and then we will further check the weeping rate until the weep rate is not, जब तक चेक करेंगे जब तक कि हमारा जो ऑपरेटिंग वेलोसिटी है वो वीप रेट से ज़्यादा ना हो जाए. Now and thereafter check the plate pressure drop, and how many types of pressure drop I will discuss. Over the tray, the total pressure drop is summation of the frictional dry plate pressure drop and the clear liquid head, and that is simply HD is the dry plate pressure drop, dry plate head, and plus HW plus HOW into beta. HW is the wear height, HOW is the wear crust height, and how HOW we will calculate, I have discussed the formula. And HD कैसे निकालेंगे, that is proportional to C naught U naught square. All the things I have discussed in the previous lectures. So we will calculate the pressure drop, and if the pressure drop is very high, then obviously we have to go for return again. Step number 6, again we have to change the plate layouting parameter in order to ensure the pressure drop across the plate should not be so high. Now and thereafter we have to check the downcomer backup, because I've told you downcomer backup is very important, and I've discussed in the last lecture also that backup means height of the liquid over the downcomer, height of liquid in downcomer. How much height of the liquid in downcomer is, that will depend upon the plate pressure drop, second height of the liquid over the trays, and third is the downcomer frictional loss in downcomer. So all the things, summation of these three, and I told you, if you recall, that is equal to 2 into 2 times of HW plus HOW plus HD plus HFL. HD जो है ड्राई प्लेट है, और उसमें ये वाला सब ऐड हो गया ना, ये फॉर्मूला आया था, हमने डिराइव भी किया था. एंड इफ डाउनकम बैकअप इज टू हाई, अगर डाउनकम बैकअप बहुत ज़्यादा हो गया तो फ्लडिंग कंडीशन हो जाएगी. आई टोल्ड यू, इफ द हाइट ऑफ द लिक्विड इन डाउनकमर इज मोर देन the plate spacing, then what happen, either we have to increase the plate spacing or we have to change the plate layout. Okay, if we are in designing mode, once designed, then we can't change these parameters. This is only during design. Okay, so here down, if too high, return to step number 6 or 3, because 6 and 3 is the only step where we have assumed some values. Now decide the plate layout details, and then we will decide what should be the plate layouting. Whatever the try value I have taken, is it same? Otherwise some changes should be there, like calming zone, unperforated areas, check hole pitch. If unsatisfactory, return to step 6.
whole pitch and go for step number 6 again. Now, then recalculate the percentage flooding based on the chosen column diameter. Whatever column diameter we have chosen, on the behalf of that we have to go for the percentage flooding, and then check internment is also okay, and then finally optimize the design. So these are the steps, and the step will be more clear when we will solve one numerical problem. So as before solving one numerical problem that I have taken from the NPTEL example, we can also consider any problem, but main objective of the problem is to get a trick to remember the steps, because if a problem is in our mind, then obviously we can recall the steps of the designing. So before this, I would like to recall plate areas. One is called as column area, AD is called as down comma area, and AN is called net area. Net area is our level for the vapor liquid disengagement, and that is called as column area minus down comma area. Active area is what also called as bubbling area. I've discussed many times, equal to column area minus 2 times down comma area for single pass plate, and AH is called as whole area, total area of all active holes. एक प्लेट पे कितने भी होल्स हैं सबका एरिया AH हो गया. AP is called as perforated areas, means area in which perforation is going to take place, and AAP, AP for apron actually, so clearance area under the down comma apron. Now, as I told you, the liquid flow arrangements, I have not discussed about the step number. First step was, if you recall, the first step was to calculate the liquid and vapor flow rates in the rectifying or stripping section, and second step was calculate or determine the efficiency properties like density of the liquid and vapor, surface tension sometime also, and third step is trial value of plate spacing, and fourth step was, on the behalf of plate spacing, we are able to calculate the column diameter by the flooding consideration, all the things. And the fifth step might have, that is the liquid flow arrangement. It is very important to have a liquid flow arrangement, because liquid flow arrangements, I told you when I was dictating, that it depends upon the diameter of the column and the liquid flow rates. And you can say the choice of plate type, what types of plate is there, reverse the 3 types of plate is there actually. 3 types of plate means pattern, on the behalf of pattern, not on the behalf of construction. On the behalf of flow pattern, the 3 types of plate is there. One is your reverse, single pass or multiple pass. It will depend upon the liquid flow rates and column diameter. So types of liquid flow arrangements will depend upon the flow rates of liquid and column diameter. This axis is the liquid flow rate. हो सकता है कि आपको ये दिख न रहा हो, but just only the thing is that हमें याद रखना है लिक्विड है, ये है डायमीटर ऑफ द कॉलम. तो अगर लिक्विड फ्लो पता है और डायमीटर पता है, ऑन द बेस ऑफ दिस वी कैन, अगर सब यहाँ पे है तो हम रिवर्स फ्लो में है, यहाँ भी रिवर्स फ्लो में है, ठीक है, इधर है तो क्रॉस फ्लो में है. तो इट इज डबल पास फ्लो, सिंगल पास फ्लो, आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस फ्लो, एंड रिवर्स फ्लो. तो ये टाइप के फ्लो है, बट जो मोस्ट कॉमन है मेरे पास वो क्या है, क्रॉस फ्लो, आल्सो कॉल्ड एज सिंगल फ्लो, सिंगल पास फ्लो. नाउ and thereafter the one more important thing is called as entrainment. Entrainment can be estimated from the correlations given by the figure, and this figure gives the fractional entrainment. Fractional entrainment means how much kg of liquid has been carried away along with the vapor to the total amount of liquid. पूरे लिक्विड में से कितना परसेंटेज जो है कैरी हो गया, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एंट्रेनमेंट. एक्चुअली साई नोटेशन इज साई, एक्चुअली ये एक्सिस साई है, एंड साई इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एंट्रेनमेंट. एंड फ्रैक्शनल एंट्रेनमेंट बहुत सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द टोटल लिक्विड हैज बीन कैरीड अलोंग विद द वेपर, इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एंट्रेनमेंट. एंड इज अ फंक्शन ऑफ liquid vapor factor, FLV. What is FLV? Listen here, my dear student. Actually FLV, in the RC volume 6, if you recall, in the calculation of maximum velocity vapor, I have used kV into under rho L minus rho V over rho V, and this kV I have calculated by this parameter L upon V under rho V by rho L as a parameter of plate spacing.
ये होगा प्लेट स्पेसिंग 6 इंच 12 इंच 18 इंच लाइक दैट. So that kV is actually this same kV they have used in the term, the notation kV has been used in the McAvey Smith, and FLV, liquid vapor factor, is going to use in the Coulson Richardson volume 6. So FLV and kV both are same actually. So you can also say it is kV, and kV is what? Simply we can calculate the kV on the behalf of plate spacing and on the behalf of L and V and this factor. For example, if L, V and rho V, rho L is known to you and the plate spacing is known to you, you can calculate kV. So once we have calculated the value of kV, then put here, and this is also very important factor. So this psi, this जो percentage interment है, the percentage interment will depend upon as a function of FLV, called as vapor liquid factor, liquid vapor factor, with the percentage approach to the flooding as a parameter. It is percentage approach to the flooding, or you can say percentage flood. Percentage flood means what? How much percentage actual velocity upon the maximum velocity is called as percentage flood. So percentage flood is parameter here. ये जो parameter है, it is percentage flood. It is actual velocity, जो operating velocity upon maximum velocity. Okay, मान लो अगर 20% है, अगर ये मान लिया आपने 90% है, इसका मतलब क्या है कि जो ऑपरेटिंग वेलोसिटी है वो 90% है फ्लडिंग वेलोसिटी का, और अगर आपने लिया 50%, इट मीन्स ऑपरेटिंग वेलोसिटी से 50% ऑफ द फ्लडिंग वेलोसिटी, एंड फ्लडिंग वेलोसिटी हमको ऐसे निकाल लेंगे. तो इस तरीके से ये पता है और ये पता है, हम निकाल सकते हैं क्या, फ्रैक्शनल इंट्रेनमेंट. और इंट्रेनमेंट जितना कम से कम हो उतना बेटर होगा, तो दैट शुड बी वेरी वेरी लेस. तो इससे हम यहाँ चेक कर सकते हैं on the behalf of this parameter. It means fractional interment is very important factor, and this we can check by knowing the liquid vapor factor or vapor liquid factor called as FLV or KV, and also percentage flood. Percentage flood is the ratio of actual velocity to the maximum velocity, and actual velocity is operating velocity and the maximum velocity is the flooding velocity. Okay, by knowing this we can calculate here. Okay, now then also very important point is the weep point. The lower limit of the operating range occurs, means जो वेपर का जो लोअर ऑपरेटिंग रेट है, रेंज है, जो वेपर की जो वेलोसिटी है उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, दैट विल डिसाइड बाय द वीप पॉइंट. इट मीन्स द लोअर लिमिट of the operating range occurs when the liquid leakage through the plate holes become excessive. When the liquid leaks through the holes, and reason is that, and obviously it is going to happen either in the sieve tray and or in the wall tray. In bubble cap tray, it is not possible to have a weep because of its construction. Now, the lower limit of the operating range occurs when the liquid leakage through the plate becomes excessive, and this is known as weep point. The vapor velocity at the weep point is the minimum value of for the stable operation. So for stable operation, the minimum velocity of vapor is the weep velocity actually, and the whole area must be chosen so that the lowest operating rate of the vapor velocity is still well above the weep point. Listen. Actually, the whole area, if whole area will be high, then obviously the velocity of vapor through the hole will be less. Area increases, velocity will decreases. Very common sense. As the velocity will decreases, then obviously it may be possible that the velocity of vapor may be equal to or less than the weep velocity. And if whole diameter is less, then the velocity of vapor will be more. But obviously there is no weeping way possible because velocity of vapor is very far from the minimum velocity, but the pressure drop will be more. So we can't have more high value of vapor velocity, and we cannot operate our column at the very low. So that's why it is very important to check this consideration. And the whole area must be, जो whole area होगा वो इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि जो लोअर ऑपरेटिंग रेट है वेपर का, जो वेपर की मिनिमम वैल्यू होगी, दैट शुड बी आल्सो मोर देन द वीप वेलोसिटी, सो जिससे वीपिंग ना हो, इंश्योर हो जाए हम. And the number of correlations are available to calculate the weep velocity, but one formula is here. I'm going to write here V. W means here you can say weeping velocity, and that is here constant K2 minus 0.9 into 25.4. It is empirical correlations
dh whole diameter डेंसिटी ऑफ वेपर रेस्ट पावर 1/2। तो यहाँ पे जो DH है बच्चे होल डायमीटर है इन mm में, U जो है मिनिमम वेपर वेलोसिटी थ्रू द होल्स इन मीटर पर सेकेंड। ये सब कांस्टेंट इस तरीके से है कि ये जो है मीटर पर सेकेंड में आएगा आपके पास, और ये जो है mm में रखोगे आप, दिस शुड बी mm बिकॉज दिस कांस्टेंट्स आर अकॉर्डिंगली चेंज। ओके, and K2 is the constant depend upon the, जो ये K2 बच्चे, that is the constant and that constant will depend upon the depth of the clear liquid on the plate। तो कितना लिक्विड का डेप्थ है उस पर डिपेंड करेगा। तो K2 का निकालना है आपको, तो वी शुड नो द डेप्थ ऑफ लिक्विड, एंड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड और हाइट ऑफ लिक्विड ओवर द ट्रे डेक विल बी इक्वल टू व्हाट, HW प्लस HW। समटाइम्स यू कैन आल्सो मल्टीप्लाई बीटा, but बीटा इज वेरी स्मॉल। So actually that K2 will depend upon the depth of liquid over the tray deck, and this is HW plus HW in mm. So once suppose it is around 50, then correspondingly value of K2 is this. Put K2 here, whole diameter already we have fixed, then we can calculate the minimum velocity of vapor. Okay, and it is also very important consideration that weir height. Weir height, it means how much, what should be the height of weir. The height of the weir determines, and height of the weir will play a very important role, because I told you the height of the weir will determine how much depth of the liquid should be on the tray deck. So height of the weir dimension determines, height of the weir determines the volume of the liquid on the plate, how much volume of liquid should be on the plate, and is important factor in finding out the plate efficiency. And if you recall, I told you if the height of the liquid head, or you can say height of the liquid over downcomer is more, and that can only be more if the weir height is more. If the weir height is large, then the height of the liquid, pool of liquid over the downcomer will be more, and even with the lower vapor velocity, obviously it should be more than the whipping velocity, the residence time will be more, because larger, more thickness, more height of the weir, more height of the liquid over the downcomer, and more will be the residence time spent by the vapor when it is going to pass through the liquid. Okay, so that's why if more residence time is going to be spent by the any vapor through the pool of liquid, then obviously the mass transfer resistance will be less, or you can say contact will be good. At the same time, if vapor velocity will be high, very high, then this vapor will break into small bubbles, and that will increase the interfacial area. So main thing is that height of the liquid is beneficial in the sense of it increases the residence time, and it is not beneficial in the sense it will increase the pressure drop. Are we getting? That's why it is very important factor. And how much height of liquid in downcomer, that will define by the weir height. So that's why efficiency of the plate will be largely dependent on the weir height, because I told you if the residence time will increases, then contact will be good, then efficiency of the stage will be more. So a high weir will increase the plate efficiency, as I told you. High weir होगा height का, तो plate efficiency increases, but at the expense of higher pressure drop, obviously. For the column operating above atmospheric, if the column is going to operate above atmospheric pressure, then weir height should be normally between 40 mm to 90 mm. ये हमें याद होना चाहिए. When the column is going to operate, then at atmospheric pressure, then the weir height should be in between the 40 mm and 90 mm, and the most common is 40 to 50 is recommended. And for vacuum operation, when we are going to operate in the low pressure column below atmosphere, then the lower weir height are used to reduce the pressure drop. Because when we are going to operate our column at the low pressure, then pressure drop will be more. Because if the pressure will decreases, then density of vapor will also decreases, and for the same molar flow rate, density of vapor into area into velocity, for the same area velocity will increases. If the velocity increases, then pressure drop will be more. To reduce the pressure drop, the best thing is that reduce the height of the weir, so that the height of the liquid, head of liquid over the tray deck will be decreased. The main thing is that inlet weirs
inlet wear is not as important. It's simple, very small. In some cases we are not going to use inlet wears. We have wear length. As I told you, the stage is there, and this is your downcomer area, that is perforation area, and that is your wear height, and above this wear crust height also there, and this length is called as wear length, LW. So with segmental downcomers, the length of the wear fixes the area of downcomer. The length will fix the area of downcomer. What should be the area? Means if you want to find out area of downcomer is variable 10 to 20% of the whole column area. But अब 10 से 20% के बीच में होता है, but लेंगे कौन सा लेंगे, that will depend upon the length of the wear. The chord length, just like here, suppose it is a here, this is your chord length. The chord length will normally be between 0.6 to 0.85 of the column diameter. ये जो chord length होगी, that should be actually, अगर ये पूरा column का diameter है, तो obviously this will be lesser than this, and it is actually 0.6 to 0.85 of the column diameter. Okay, and the most common is 0.77. So that is your, and the relationship between the wear length and downcomer area is given in the figure. ये जो figure है, here it is a figure. So it is your LH. LH is the whole LH here. They have used the terms LH for the wear height, and D is the diameter of the column. Actually, a plate you can say also. LW is the wear length. L is the wear height actually. Wear height, wear length, and they have divided by the correspondingly diameter. And theta C is the angle. I will discuss how we can go for this, how can use this figure in the later on. This is the column diameter actually. Hole size. The hole size used vary from 2.5 to 12 mm, and 5 mm is more preferred. So we should also know जो होल साइज होगा 2.5 से 12 mm के बीच में होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो 5 mm है. Larger holes are occasionally used for foaming system. Foaming system में ज़्यादा जहाँ foaming tendency होगी वहाँ तो हम packed out prefer करेंगे, but still if you want to go for the plate column, then larger hole diameter should be preferred. Okay, so that is a part here. Now it is a hole pitch also. The hole pitch क्या है? The distance between the hole centers is called as hole pitch. दो holes है, वही जो हमने heat exchanger में पढ़ा हुआ, दो hole के बीच जो distance है that is called hole pitch LP, and it should be less than 2 times of hole diameter. It is also very important. जो hole pitch होगा PT, हम heat exchanger में जो पढ़ते थे it is 1.25 times diameter for the design of heat exchanger, but here the hole pitch should not be less than, it means should be more than or equal to actually 2.0 times of diameter, hole diameter DH, not column diameter. column diameter तो होगा नहीं, common sense है. hole diameter मान लीजिए ये hole है, ये plate है, इस पे जो भी holes लगे हुए हैं इनके diameter का दोगुना जो होना चाहिए वो spacing होना चाहिए at least. ध्यान रखना 1.25 times in the heat exchanger, and in the column the hole pitch should be at least 2 times. Okay, the normal range will be 2.5 to 4. तो जो normal हम रखते हैं वो 2.5 होना चाहिए, 2 से दोगुना ज़्यादा, बट ज़्यादा मतलब 2.5 और 4 के बीच में ये most common है. Within this range the pitch can be selected to give the number of active holes required for the total hole area specified. तो अब यहाँ पे दो होगा स्क्वायर और इक्विलेटरल अरेंजमेंट. वी नो वेरी वेल इन द हीट एक्सचेंजर आल्सो द टू टाइप अरेंजमेंट इज द वन इज स्क्वायर, थ्री होता है स्क्वायर, ट्रायंगुलर एंड द रोटेटेड स्क्वायर, बट द मोस्ट टू कॉमन इज द स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल. Triangular is preferred because I told you triangular will, in a given diameter, it will involve the more number of holes. The total hole area as a fraction of perforated area, the AH is the total hole area and AP is the perforations area, जिसमें area में hole हुआ है, is given by the following expression for an equilateral triangular pitch. ये equilateral triangular pitch के लिए formula दिया हुआ है. DH is the hole diameter, LP is the
जो आपके पास पिच है ये, तो नो नीड टू गो फॉर दिस रिलेशनशिप, एटलीस्ट ड्यूरिंग डिजाइन यू शुड नो। तो ये एच और एपी, अदरवाइज इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसी को हमने यहाँ प्लॉट कर दिया गया है ए एच और ए पी में, इसी क्वेश्चन को यहाँ प्लॉट कर दिया गया है ए एच ए पी और एल एच एल पी में, दैट इज गोइंग टू प्लॉट हियर नाउ। अल्टीमेटली द मेन थिंग इज दैट हाउ कैन यू डिजाइन द प्रॉब्लम। लिसन, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो स्टेप था, स्टेप याद कैसे होगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि इंटरव्यू कि आप हाउ कैन यू डिजाइन द हीट एक्सचेंजर्स, सॉरी डिस्टिलेशन कॉलम, then your answer should be first step from the given data, whatever the data, whatever the feed rate, all the things is given on the behalf of that, because आप डिजाइन करने जा रहे हो तो एटलीस्ट what is given to you. Suppose I am owner of the company and I told you to design a distillation column which should be treat the feed with this rate, feed given over what should be the rate of feed for rate, and what will be the composition of the, suppose we are going to design the binary mixture, let's say acetone water mixture, and that acetone water mixture is equivalent amount 50% acetone and 50% water, and your purpose, you are a design engineer and your objective is to design the heat exchanger, to design the distillation column in order to treat this feed having this composition, in order to have a 98% purity at least and 1% maximum in the bottom, and efficiency I have given, let's say 60% efficiency, all things. So same in the same sequence I have just going to show you a problem, or design a continuous distillation column to recover acetone from 50 mole percent acetone water mixture available at 30 degrees Celsius. Means first of all data is given as feed temperature is 30 degrees Celsius. Now what is the condition of feed that I can decide on the behalf of bubble point. If the bubble point temperature is more than the feed temperature, suppose ये liquid mixture है, साफ साफ लिखा हुआ है 50 मोल पर acetone water mixture है, liquid mixture है, तो obviously that mixture is first vapor is going to form at the bubble point with the same composition, because as we are going to start the heat from the feed to the bubble, there is no change in composition. Composition will change, I have shown you in the boiling point diagram if you recall. So when the feed temperature is lower than the bubble point temperature, then obviously the feed is a cool liquid. If it is equal to the bubble point temperature, it is a saturated liquid. Okay, so on the behalf of that we can say, so first of all design a continuous distillation column to recover the acetone from 50 mole percent acetone water mixture available at 30 degree Celsius. The feed stream flow rate जो F दिया हुआ बच्चे, given as 25,000 kg per hour, kg में दिया ध्यान रखना, ये दिया मोल फ्रैक्शन है, तो we have to change in the mole. The top product should contain at least 95%, कम से कम 95% acetone होना ही चाहिए, and the bottom should contain less than 1% acetone. Bottom में जो acetone होगा बहुत ही कम होना चाहिए, obviously because acetone is a lighter component, so its composition should be less than 1% by mole. Consider rebowler as a equivalent to one stage, rebowler को हम as a one stage से treat करेंगे. This column is operated at atmospheric pressure, जो column का जो pressure है top पे वो कितना है, atmospheric pressure है top tray पे. Column efficiency of 60%, जो efficiency है column की 60% है. Overall efficiency दिया हुआ है, that is called as overall efficiency. If you recall in the classroom I told you three types of efficiency. One is overall efficiency, one is plate efficiency, also called as Murphy plate efficiency, and other is called as point efficiency. And the column efficiency of 60% and the pressure drop per plate, एक प्लेट का जो प्रेशर ड्रॉप दिया हुआ है वो दिया है 1.25 किलो पास्कल में भी assumed, तो प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे दे दिया है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है. Now you can take the minimum liquid flow rate as 70% of the maximum rate of the both above and below the feed point. जो above the feed point is rectifying, below the feed point is stripping. दोनों कंडीशन में जो वेपर और लिक्विड जो लिक्विड का मिनिमम जो फ्लो रेट होगा that should be 70%, उससे कम नहीं होगा. The vapor liquid equilibrium is given here, and the following data is also given. Latent heat of pure water and the latent heat of acetone is also given, because if you want to find out latent heat of
mixture, then obviously we have to multiply. Mixture is of the two component, water and acetone. Then if you want to find the latent heat of the mixture, we should multiply the corresponding latent heat with the corresponding mole fractions, and then you have to add. Okay, that we should know very well. And the specific heat of the water and the specific heat of the acetone is also given. And if you want to go for the mean specific heat of the mixture, then obviously summation xi into CPI. ये हमने इस प्रोसेस कैलकुलेशन में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी. ये आपके पास वेपर लिक्विड VLE डेटा दिया हुआ है. VLE टेम्परेचर XY. It means obviously here it is your temperature and XY curve is given. Boiling point diagram it is given to you. ये बच्चे tie lines दिया हुआ है. ये X they Y they are in equilibrium. These X these Y are in equilibrium. On the behalf of that we can also go for the XY equilibrium curve. XY equilibrium curve के diagonal line ड्रा करोगे. ये जो भी this will fall down and we can draw the this curve. इस तरीके से हम XY equilibrium curve को ड्रा कर लेंगे. ये हमें पता है बहुत पहले से. तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो material balance and determination of number of, and if you want to calculate the number of stages, we are going to use the Markov-Thiele method. By using the Markov-Thiele method, we are able to calculate the number of stages. And once we will calculate the number of stages, and also we are able to calculate the V bar and L bar and V and L, vapor and liquid fluid in the rectifying, and the vapor and liquid fluid in the stepping section. So as feed is concerned, feed is 0.5 acetone, 0.5 water, and top product constant is HD, and it is a 1 minus XD, HW 1 minus XW. And the bubble point जो दिया हुआ है, that we can calculate. Bubble point is the temperature at which the first vapor is going to, and it is very simple कि if you want to go for a bubble point, so we should know this concept. T and XY plot is given to you, and if it is 50%, then here it is a midpoint, and it is a feed temperature TF. TF is given as 30 degrees Celsius, and it is your bubble point temperature for this composition. इस कंपोजिशन के लिए ये बबल पॉइंट टेम्परेचर हो गया. तो हाउ कैन कैलकुलेट नाउ फ्रॉम डेटा, ऑलरेडी डेटा इज गिवन टू यू, यू कैन सी हियर at the 0.5 is the mole fraction of the ZF of more volatile component, and that is your 59.95 degrees Celsius. So bubble point temperature of this mixture having 50% acetone and 50% water is 59.95. So that is your 59.95 is the bubble point temperature. And I told you, if you recall, bubble point temperature is a function of composition, okay, and dew point temperature as well. Now it is a bubble point temperature, it is a feed temperature, and the difference, because here the feed temperature is lower than the bubble point temperature, then feed is subcooled liquid. Then if you want to find the Q, because it is very important to have a Q line equation during the analysis of the plate column number of stages by Markov-Thiele. Q is क्या होता है बच्चे? Q is defined fraction of the feed that is in the liquid phase, and also we can define and if feed is subcooled liquid, the Q is more than 1. We know very well. And on the behalf of energy balance, we can also define the Q as defined as a ratio of energy required to vaporize 1 mole of feed to saturated vapor feed. 1 मोल फीड को सैचुरेट वेपर बनाने के लिए कितना हमें एनर्जी चाहिए अपॉन latent heat of vaporization. And if you want to find out the latent heat of vaporization, then Q is a lambda, and lambda of mixture obviously. And to find the lambda of mixture means to convert the feed from the saturated liquid to saturated vapor. तो feed को saturated liquid से saturated vapor बनाने के लिए कितना आपको provide करना पड़ेगा एनर्जी, that is called as lambda. And lambda we can calculate by, it is your latent heat of acetone. It is for water, sorry, 4-1 वाला जो water का है, तो it is for water, it is for acetone, and corresponding mole fraction is 0.5 and 0.5. Then we can calculate the latent heat of feed mixture. Okay, it is energy required for to convert the 50 mole percent acetone water mixture from its condition of saturated liquid to saturated vapor. अगर feed saturated liquid होता तो इतनी एनर्जी देने की पड़ती उसको saturated vapor बनाने के लिए, that is lambda. But आपको जो feed है that is subcooled liquid, it means more energy than this will be required. And how much more energy? We know very well when Q is more than 1, that I told you many times, that is Cp of feed. Okay, and this is obviously T minus T bubble point minus T feed point.
and plus lambda v lambda of mixture upon lambda, and that is 1 plus Cp into Tv minus Tf upon lambda, and everything Cp of the mixture. If you want to go for Cp of the feed mixture, then obviously we have to go for the corresponding Cp of the acetone into mole fraction and water into mole fraction, and then we can write like that. And by this way we can calculate the value of Q here. Then Q is we can calculate, and this Q is found to be 1.09, and it is very obvious it should be more than 1. Okay, and we can go for the slope of Q line, Q upon Q minus 1. As far as the equation for the operating line, equation for the Q line is concerned, y equal to Q upon Q minus 1 into x minus ZF upon Q minus 1. That is your Q line equation. I have told you the Q line is the intersection. Q line is the intersection. Locus of Q line is the locus of intersection of the upper and lower operating lines. So here the top operating line is just touches the equilibrium curve at the point of tangency of the rectifying section. Now listen here. First of all, we should calculate the what is the minimum reflux, because they have not given any information about the slope or reflux ratio. That's why it is, let's say y and x curve is there. This curve I have drawn here. XD is given to you because they have demand that 0.95 should be at least 0.95. It should be 0.01. Less than 1% should be there. And feed line is given, and ZF is 0.5. Then feed line, since Q is more than 1, then obviously it is here. And in intersection of these two lines over the equilibrium curve will give the condition for the minimum reflux. That already I have discussed in the classroom. Now intersection of these two lines over the equilibrium curve will give the condition for minimum reflux. It is y prime and x prime, and the slope of this will be called as slope of this. In this case, whatever slope is there, that slope will be r prime upon r minimum over r minimum plus 1. Or you can also show, since we are going to show graphically, so you can also go for this. This will be, this intercept is what, xd upon rm plus 1. It is much more easy, क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये जो इंटरसेप्ट है, दैट इंटरसेप्ट करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम रिफ्लक्स. तो xd तो गिवन ही आपको, rm मिल जाएगा सीधे डायरेक्टली. जो भी इसको रीड कर लोगे आप, जहाँ पे ये इंटरसेप्ट करेगा, तो वहाँ से rm आ जाएगा. और ऑपरेटिंग जो होगा, दैट शुड बी 2.5 times r minimum. That should be given in the problem. Otherwise ऑप्टिमम कंडीशन से जनरली हम निकाल सकते हैं. 1.2 भी होता है, बट यहाँ पे गिवन होना चाहिए, उसको देना चाहिए. 2.5 हमने रख लिया. That is taken for design. उसको वेरी भी कर सकते हैं, but R operating should be always more than R minimum. Now average molecular weight of feed we can calculate here, because feed is given the kg per hour, and all the compositions are given the mole fraction, and that's why it is very important to change in the mole, and that's why it is important to write the average molecular weight, and divide by average molecular weight will give the molar flow rates, kilomole per hour. And as far as balance is concerned, overall balance is concerned, it is d into xd is equal to f into xf. It is f actually, xf is 0.5, and I have not written actually, listen here, f into zf actually, d into xd plus w into xw. Actually xw is 0.01. 1% is very very negligible, we can neglect it. Okay, and because less than 1% is required, that's why it is very very negligible, we can neglect this. And by this way, f is given to you, zf is given to you, d xd is given to you, you can go for the d. And once we have calculated the d also, then we know that जो टॉप सेक्शन जो निकलेगा v equal to l plus d, and we know that r equal to l upon d, then l equal to r into d, then it is r plus 1 times d. You have vapor. So we can go for the v. V is the fluid of vapor in the rectifying section, and we are going to assume the McCabe assumption. Okay, so it is d into 1 plus r, d is given to you, 1 plus r is given, we can go for the v. And once the v is known to you, we can know v equal to l plus d, d is also known to you, v is also known to you, we can go for the l. The ultimate purpose is to calculate the vapor and liquid fluids. Okay, so that vapor and liquid fluid I have calculated in the case of
rectifying. Now as we know that W equal to F minus D, or you can say B here, so we can also calculate the value of B here, bottom product. And obviously we have assumed the constant molar of rates, then balance over the reboiler, bottom section is what it is your this L we have already calculated, same thing here, these things we have already calculated here. And as far as below plate is concerned, it is your L bar is going to go for the, some part is going to here V bar and here W. The L bar is going to enter, it is going to separate two parts, V bar and W. The L bar equal to V bar plus B or W, you can say it is bar means liquid and vapor fluid in the stepping section, also you can say prime. And as far as slope of the bottom line is concerned, we can calculate the slope. Why? Because you can see this figure. If you will observe this figure, I have told you that it is your minimum, it is slope corresponding to what? Slope corresponding to minimum. And since operating is what? Operating R will be more than R minimum, it is around 2.5 times now. The slope will also be increases. Then ऑपरेटिंग जो ये तो मिनिमम कंडीशन में, बट एक्चुअली ये हो जाएगा इस कंडीशन में, चूंकि फीड लाइन तो चेंज होगा नहीं, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो सेम ही रहेगा. तो ये तो पता ही आपको जरूर, यहाँ से आप ड्रा कर दोगे, यहाँ से क्या जाएगा बच्चे स्लोप, एंड दिस स्लोप ऑफ द बॉटम लाइन विल ऑलवेज बी मोर देन 1. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि केवल इक्वल टू 1 होगा लिमिटिंग कंडीशन में, जब टोटल रिफ्लक्स की कंडीशन होगी. तो उस कंडीशन में हम ग्राफ से स्लोप को रीड कर सकते हैं. It is your L bar upon V bar is found to be 1.32, and L bar is the liquid fluid below the plate, and V bar is the vapor fluid below the feed point. Simple है, इस टाइप सेक्शन की बात कर रहा है ये. और यहाँ पे B पता आपको, दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे आप. L bar equal to V bar plus B हम निकाल चुके हैं. यहाँ पे दो इक्वेशन, दो अननोन, you can solve for this, you will go for L bar and V bar. क्लियर है? नो, तो ये जो पूरा हमने पार्ट किया, उसके बाद से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेज को काउंट करेंगे बाय द लाइक दैट. ये आगे पॉइंट, ये आगे पॉइंट, यहाँ से 1 2 3 4 काउंट करते जाओगे आप. इस तरीके से काउंट करके जो नंबर ऑफ स्टेज आएगा दैट इज 6 एबव द फीड एंड 3 बिलो द फीड. टोटल फीड कितना आ गया 9, टोटल स्टेज कितना आ गया 9. एंड ऑब्वियसली 9 में से जो एक होगा वो रिवॉल्वर के लिए यूज होता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द टोटल कंडेंसर. तो 1 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द टोटल स्टेज 8. And since overall column efficiency is given as 60%, and we know that question में दिया हुआ था कि overall efficiency of the column is 60%, and we know that overall efficiency is defined as real number of stages, ideal stage upon actual stages, ideal stage upon actual stage. So ideal stage I have calculated because from the McCabe theory we always calculating the ideal number of stages, and that is found to be 8. Then actual stage will be what? An actual number of stages will be 8 upon 0.6, that will be 14. So 14 is the total number of real stages in the column, and this is the graph you have seen. This is the graph corresponding to the minimum flux. ये जो corresponding है, sorry not minimum, oh 2.5, ये थोड़ा सा फिगर गलत बना हुआ है. अगर ये आपके पास ये कंडीशन है तो हाँ यहाँ से जाना चाहिए इसको. हाँ एक चीज़ ध्यान देखिए, अगर कहीं टेंजेंट ड्रा होता है, मान लीजिए ये तो हमने जनरली अगर ऐसा होता तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ से जाना पड़ता यहाँ पे इस पॉइंट पे. बट जहाँ भी अगर कर्व ऐसा बन रहा है उस कंडीशन में ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर द टेंजेंट. जहाँ पे टेंजेंट मिलेगा दैट इज करस्पॉन्डिंग टेंजेंट विल बी द आर मिनिमम लाइन. ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा. क्योंकि यहाँ पे हम ये कंडीशन ले सकते हैं, ये नॉर्मल कर्व नहीं है, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे. टेंजेंट जहाँ पे कर लेगा करस्पॉन्डिंग विल बी आर मिनिमम. तो यहाँ से आर मिनिमम वाली कंडीशन आ गई थी जो मैं आपको बता चुका हूँ. एंड देन वी ऑपरेटिंग विल बी 2.5, स्लोप इंक्रीज हो जाएगा, एंड देन ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ से जाएगा. एंड देन वी विल एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेजेस बाय मैकअप थ्योरी. नाउ तो अभी तक हमने जो स्टेप नंबर फर्स्ट था, मैंने आपसे कहा था डिजाइनिंग के लिए जो स्टेप होगा, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, योर फर्स्ट स्टेप इज
The first step in designing is to calculate the L, V, L bar and V bar, or you can say liquid and vapor flow rates in the column from the given data. जो भी डेटा दिया हो वहाँ से आप L और V निकालोगे एंड एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेजेस भी आप निकालोगे. उसके बाद जो सेकेंड स्टेप था याद होगा आपको, अगर आपको सेकेंड स्टेप इज दैट एस्टिमेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज को एस्टिमेट करना है. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेनली होगा बच्चे, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वेपर. एंड सिंस द प्रेशर एंड टेम्परेचर is going to change in the top and the bottom, then obviously the density will also be changed. So first of all, I'm going to consider the top section and then I will discuss the bottom section. And as I told you in the question, they have given the top, since it is atmospheric distillation, it means at the top the pressure is atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक करने का सेंस क्या है कि जो टॉप को जो कॉलम है, टॉप जो ट्रेज है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे. बट जैसे जैसे नीचे आओगे प्रेशर विल इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ प्रेशर ड्रॉप. ओके, नाउ तो टॉप जो प्रेशर है दैट इज ओवर 1 atm. ओके, एंड द कॉलम जो प्रेशर ड्रॉप कितना दिया हुआ है कि एक स्टेज पे 1.25 है और टोटल स्टेज हमने काउंट किया कितना बच्चे 14, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया इतना किलो पास्कल टोटल प्रेशर ड्रॉप. इसको ऐड कर देंगे इतने में तो क्या आ जाएगा, प्रेशर एट द बॉटम. यहाँ पे ऐड कर दिया तो प्रेशर कहाँ गया बच्चे, बॉटम पे आ गया. आर गेटिंग पॉइंट? तो इट इज अ प्रेशर एट द टॉप, इट इज प्रेशर एट द बॉटम. एंड हाउ वी हैव कैलकुलेटेड, बिकॉज प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस स्टेज इज गिवन, देन टोटल प्रेशर ड्रॉप थ्रू द कॉलम is equal to pressure drop across one stage into number of stages, and number of stages I have already calculated by the Mercalli method. Now, so once, and the temperature is obviously, how can find the temperature? Temperature is temperature we can calculate by knowing the HD. ऊपर जो वेपर निकल रहा है that is what 0.95% वेपर उसमें. तो since जो भी कंपोजिशन जा रहा है ऊपर वो भी क्या है 0.95 है. तो since it is 0.95 then obviously we can go for the corresponding bubble point temperature. Are you getting? तो ये जो डेटा आपको दिया हुआ था यहाँ से अगर देखोगे, ये देखिए 0.95 है, तो 0.95 जो bubble point temperature है वो 56.3 है. तो you are going to see as the purity increases the bubble point temperature goes on decreases. Okay. तो कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, मैंने बोला आपसे कंपोजिशन चेंज होता जाएगा क्योंकि प्योरिटी तक पहुंच रहा है. अगर ये 100% पहुंच जाएगा तो इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योरिटी. आर यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई एट द टॉप द टेम्परेचर विल बी लो. ओके, नाउ तो यहाँ पे देखा आपने कि 95% चाहिए एचडी, और एचडी ही क्या है, वही वी बार, वही वाई बी है जो टॉप से निकल रहा है वेपर उसका कंपोजिशन. क्योंकि टोटल सिंस वी आर गोइंग टू यूज द टोटल रिफ्लक्स, देन व्हाट एवर द कंपोजिशन इज देयर, कंपोजिशन विल नॉट बी चेंज, इट इज गोइंग टू ओनली amount will be changed after condensing, but the composition will be same here. तो corresponding जो आपके पास टेम्परेचर आ गया दैट इज 56.3. तो जो टॉप पे टेम्परेचर हो गया वो हो गया 56.3 और प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक. तो दैट इज योर 56.3 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो नीचे है, नीचे आपके पास क्या है, मेनली लेस देन 1% है. 1% अगर वहाँ पे एसीटोन है इसका मतलब मोस्टली क्या है, वाटर है. तो वाटर का हम बॉइलिंग पॉइंट ले लेंगे डायरेक्टली, बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज जो कंपोजिशन है एसीटोन का वो लेस देन 1% है. तो 1% बहुत ही कम माना जाता है. 99% में अगर मान लो 400 किलोमोल पर आवर में 399 जो है, ना 399.99 जो है दैट इज वोट वाटर. तो प्योरली वाटर हो गया. तो इस प्रेशर पे हम स्टीम टेबल से वी कैन रीड द व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट 105 डिग्री सेल्सियस ऑफ द वाटर. तो इस तरीके से मेरे पास टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया, यहाँ पे प्रेशर आ गया, यहाँ पे टेम्परेचर आ गया, टॉप पे और बॉटम पे. इज इट राइट? Okay, now and you are going to see that temperature at the bottom is more and temperature at the top is the low, and that is the reason why the top पे जो temperature होता है लो होता है और bottom पे temperature कम होता है. जैसे डिफरेंस पढ़ाओगे तो ज़्यादा क्या होगा कि वेपर जो हेवियर कंपोनेंट है वो वेपर से कंडेंस होकर नीचे आएंगे. तो ऑब्वियस बात है कि जो टेम्परेचर होगा, प्योरिटी बढ़ेगी, प्योरिटी जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर विल बी डाउन. और एक और डाउन होने का रीज़न है, अगर आपने प्योरिटी फिक्स रखा हुआ है उस कंडीशन डाउन कैसे होगा, बिकॉज मोर सेंसिबल हीट विल बी ट्रांसफर्ड बाय द एक्सेस रिफ्लक्स, एंड दैट्स व्हाई इट विल आल्सो बी कूल डाउन. नाउ तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस we are going to assume the vapor as ideal gas, then PV equal to nRT
बाय नोइंग दिस वी कैन कैलकुलेट प्रेशर इज गिवन, टेम्परेचर इज गिवन, डेंसिटी निकाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ भी चूंकि ये वाटर है तो सिंपली डायरेक्टली वी कैन यूज स्टीम टेबल, तो यहाँ से हम रो बी और रोयल भी निकाल लेंगे, स्टीम का और लिक्विड का, ठीक है। तो every vapor is the, I told you in the column, every vapor is should be saturated vapor, every liquid must be saturated liquid। तो इस तरीके से हम डेंसिटी लिक्विड की और वेपर की निकाल लेंगे, ओके। अच्छा, हम डेंसिटी लिक्विड मिक्सचर कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ द वाटर की दिया हुआ है और एसीटोन के दिया हुआ है। तो रो ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए चूंकि टॉप पे है तो 0.95 जो है एसीटोन है इंटू डेंसिटी ऑफ एसीटोन प्लस 0.05 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। इस तरीके से करके हम डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लेंगे, ठीक है बच्चे, लिक्विड का। और सिमिलरली वेपर का निकालने के लिए हम यही काम तो करेंगे। तो नाउ तो दिस इज द वे हाउ कैन यू कैलकुलेट द डेंसिटी। तो मेन पर्पज यह है कि हमें प्रॉपर्टी निकालना है, इस तरीके से प्रॉपर्टी हम निकाल लिया अल्टीमेटली। नाउ उसके बाद से जो थर्ड स्टेप था, पहला स्टेप क्या हो गया याद होगा, पहला स्टेप हमने एल लिक्विड एंड वेपर फ्लूइड्स वी हैव कैलकुलेटेड इन द रेक्टिफाइंग एंड इन द स्टेपिंग। Second step, we have calculated the physical properties like density of vapor and liquid, and third step is assume the trial value of plate spacing. The plate spacing 600 mm is considered for the first trial. First trial के लिए हम जो यूज कर रहे हैं spacing वो 600 mm यूज कर रहे हैं to calculate the capacity parameter. Okay, C capacity वही जो FLV या KB बोलो वही सेम है जो हम KB बोलते हैं, okay। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम वही यू बी निकालने के लिए यू बी इक्वल टू सी एस बी बोलो या जो भी बोलो अंडर वुड रो एल माइनस रो वी अपॉन रो वी, इन द मैकेनिज्म में दे यूज द के बी। तो इसको बोलते हैं क्या, कैपेसिटी पैरामीटर, एंड बाय दिस वे। और किसके फंक्शन होता है बच्चे, प्लेट स्पेसिंग का, आपको पता होगा। तो सी एस बी दिया हुआ है और ये आपके पास के बी बोल लीजिए, ये एल अपॉन वी अंडर वुड रो वी अपॉन रो एल और प्लेट स्पेसिंग यहाँ से हम निकालेंगे सी एस बी को हर दिन क्या जाएगा फ्लडिंग वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। और ये चूंकि ये एल अपॉन वी लिक्विड एंड वेपर फ्लूइड्स जो है रेक्टिफाइंग में अलग हुआ और स्टीपिंग में अलग हुआ। सिंस द फ्लूइड्स इन द रेक्टिफाइंग एंड स्टीपिंग सेक्शन विल बी डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू गो फॉर व्हाट द टू सेक्शन, वन इज व्हाट टॉप सेक्शन, अदर इज बॉटम सेक्शन। इन टॉप सेक्शन ऑब्वियसली हियर द फ्लो पैरामीटर इज FLG बेस्ड ऑन द मास फ्लूइड, एल अपॉन जी ये जो फ्लो पैरामीटर हम बोलते हैं FLV, एल अपॉन बी रो बी बाई रो एल जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ये निकाल लोगे, बॉटम पे निकाल लोगे। उस तरीके से ग्राफ से कैपेसिटी पैरामीटर या बोलो के बी बोल लो इसको, के बी आ जाएगा, यहाँ से भी के बी आ जाएगा। फिर यहाँ पर रख दोगे क्या आ जाएगा बच्चे, फ्लडिंग वेलोसिटी आ जाएगा। टॉप पे सरफेस टेंशन का इफेक्ट हमने कहा था वो होता है नेग्लिजिबल, यू कैन आल्सो अवॉइड दिस टर्म, ओके। तो वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी वेपर फॉर द फ्लडिंग वेलोसिटी इन द टॉप एंड द बॉटम। इस तरीके से टॉप और बॉटम में फ्लडिंग वेलोसिटी आ गई आपके पास, मैक्सिमम वेलोसिटी। Clear that I have calculated here. It is a maximum velocity at the top, it is a maximum velocity at the bottom. And since here linear design value, I am going to use the net area based on net area. Operating जो velocity होगा बच्चे 80% of the flooding velocity we are going to assume. Operating velocity we are going to consider 80% of the flooding velocity. और ये कितना होगा that will also depend on some parameter, but generally we should know 50 to 80% हमें लेना चाहिए। तो ऑपरेटिंग वेलोसिटी आ गया यहाँ से 80% ऑफ मैक्सिमम, यहाँ पर फ्लडिंग ये है टॉप पे, बॉटम पे ये है। इस तरीके से हम ऑपरेटिंग वेलोसिटी निकाल लिए। और ऑपरेटिंग वेलोसिटी अगर निकालिए तो आपको पता है कि डायमीटर कैसे निकालोगे, यू नो वेरी वेल दैट वी बार, यहाँ पे चूंकि ये टॉप वाला है वी इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू ऑपरेटिंग वेलोसिटी। ऑपरेटिंग वेलोसिटी आ गया है, ये है डेंसिटी वेपर, ये आपको पता ही है। यहाँ से वी आप निकाल चुके हो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में, यहाँ से क्या जाएगा एरिया। तो फ्रॉम दिस वी आर एबल टू कैलकुलेट द, या तो आप वॉल्यूमेट्री निकालो या डायरेक्टली आप निकाल सकते हो ये रो वी अपॉन एम करके। तो अल्टीमेटली यू आर एबल टू कैलकुलेट हेयर एरिया। लिसन हेयर, नेट एरिया रिक्वायर्ड। तो यहाँ जो आएगा बच्चों नेट एरिया आएगा, जो भी हम यहाँ निकालेंगे दिस एरिया विल बी नेट एरिया। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू डिस्कस मेनी टाइम्स इट नेट एरिया, एंड वंस द नेट एरिया इज गिवन टू यू and downcome area is 10% of the column area. If downcome area is 10% of column area, then जो नेट एरिया होगा कितना होगा बच्चे 90%, बिकॉज नेट एरिया इज कॉल्ड एज, याद होगा मैंने कहा था AC माइनस AD, दैट इज जो 90% ऑफ कॉलम एरिया। नेट एरिया ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेट हियर 3.88 अपॉन 0.9 कर देंगे
we will able to calculate column area. Similarly here also the same thing is going to happen in the right side also. So we are able to calculate the column area in the top and the bottom, okay, and the corresponding diameter. The 2.34 diameter I have calculated on the top and 2.36 in the bottom. Now actually ऐसा नहीं हुआ in the real practice that diameter of the top is different and the bottom is different. Diameter हर जगह uniform होता है, but actually as far as design point of view we have to choose those value of diameter which is maximum, जो maximum होगा, क्योंकि अगर हम ये choose करते हैं then we are not able to perform the bottom operation, and that's why we have to use the maximum diameter whatever I have calculated among that. So जो भी between the two diameter we have to use the diameter which is maximum. तो use the higher value of tower diameter for uniformly between section, uniform रहेगा, ऐसा नहीं होगा टॉप पे अलग बॉटम पे अलग. हम 2.36 आ गया, उसी को हम एज्यूम करके डायमीटर पूरे को डिजाइन कर लेंगे, राइट. तो ये था मेरा स्टेप नंबर, दैट वाज स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप. याद है यहाँ तक? यहाँ तक पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट द लिक्विड एंड वेपर फ्लूइड इन द रेक्टिफाइंग द स्टेपिंग सेक्शन बाय गिविंग पैरामीटर्स. सेकंड स्टेप, और कैसे निकालोगे अपन भी आप देखो ग्राफिकल मेथड में क्या क्या चाहिए होगा, क्यू निकालना, ये निकालना, वो निकालना, सारी चीज़ें करके. नहीं जो दिया हुआ आपको एज्यूम करना पड़ेगा, जो भी नहीं दिया है एज्यूम करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग? एज्यूम दिस. नाउ सेकंड स्टेप इज दैट कैलकुलेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. उसके लिए क्या चाहिए? प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए. प्रेशर टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? हमें प्रेशर टॉप पता है एटमॉस्फेरिक है. बॉटम पे कैसे आएगा? हर एक स्टेज का प्रेशर टॉप गिवन होगा, एज्यूम कर लेंगे नहीं दिया होगा तो, ठीक है. उसके बाद से हम कर लेंगे कैलकुलेट. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वेपर वी विल एबल टू कैलकुलेट. एंड थर्ड स्टेप प्लेट स्पेसिंग एज्यूम करेंगे. फोर्थ स्टेप प्लेट स्पेसिंग यूज करके हम क्या करेंगे? केवी निकालेंगे. केवी से मैक्स हम निकालेंगे फ्लडिंग वेलोसिटी. फ्लडिंग वेलोसिटी निकालेंगे डायमीटर. तो इस तरीके से हम अल्टीमेटली डायमीटर हमने निकाल लिया. अब आते हैं हम जो नेक्स्ट स्टेप हमारा, दैट इज फिफ्थ स्टेप, सिलेक्शन ऑफ लिक्विड फ्लो अरेंजमेंट. मैंने कहा था कि लिक्विड फ्लो अरेंजमेंट कैसा होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द, आपने देखा था वाइट कार्ड, लिक्विड फ्लो एंड कॉलम डायमीटर. तो ऑन द बिहाफ ऑफ लिक्विड एंड कॉलम डायमीटर वी आर एबल टू कैलकुलेट द, यहाँ पे जो भी होगा सिंगल पास वहाँ से ग्राफ से देख लेंगे हम. अगर नहीं दिया तो इसकी जरूरत भी नहीं है, हम सिंपल सिंगल पास ही यूज कर लेंगे. नाउ अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोविजन फॉर द प्लेट डिजाइन. बच्चे मेरे पास कॉलम डायमीटर जो आया है 2.36 है, बट अप्रॉक्सीमेट हमने कर लिया 2.4 मीटर. अप्रॉक्सीमेटली हमने लिख दिया 2.4 मीटर डायमीटर कॉलम का. कॉलम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इट इज जो कॉलम डायमीटर, ओके. एंड π/4 into d square is the column area. π/4 into d square. इस तरीके से हम कॉलम का एरिया निकाल लिया. और डाउनकम एरिया बच्चे कितना दिया हुआ है? डाउनकम एरिया इज ऑब्वियसली 10% ऑफ द टोटल टावर एरिया. तो ये सब एरिया आ गया, सारा हमने निकाल लिया कैलकुलेशन. नेट एरिया कितना हो गया? ये भी हमने निकाल लिया. नेट एरिया AC माइनस AD, टावर एरिया माइनस डाउनकम एरिया, इसका नेट एरिया ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलम एरिया. नाउ वियर लेंथ, एज आई टोल्ड यू दैट वियर लेंथ जो होगा LW जो कॉर्ड लेंथ होती है, दैट इज अराउंड 66% से लेकर के 80% तक होता है. अगर याद होगा आपको, मैंने बताया था जो कॉर्ड लेंथ इस तरीके से, ये अगर है कॉलम का डायमीटर है, और अगर हम यहाँ से लेते हैं लेट से, ये हमने पॉइंट लिया है, तो ये जो लेंथ होगा दैट इज अराउंड 0.66 से 0.8 होता है. बट जो मोस्ट कॉमन है वो पॉइंट हमने ले लिया. इसके बीच में कोई भी आप ले सकते हो. तो हमने 0.73 ले लिया LW. LW हो गया वियर लेंथ. ये जो लेंथ होगी दैट लेंथ विल बी ऑब्वियसली लेस देन द डायमीटर बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द आर्क एंगल. ओके. वियर हाइट, वियर हाइट पता है, अगर इफ वी आर गोइंग टू ऑपरेट अवर कॉलम एट द एटमॉस्फेयर देन जो वियर की जो हाइट होगी वो 40 से 60 mm के बीच में वेरी करेगी. हमने 40 mm यहाँ पे कंसिडर कर लिया. दैट इज ऑल अबाउट ट्रायल वैल्यू. तो 6 स्टेप जो है ये टोटली जो है ट्रायल वैल्यू पे बेस्ड है. तो ये तो हमने निकाल लिया, बट जो ये बाकी चीज़ें हम ट्रायल वैल्यू पे लेके चल रहे हैं. ये ट्रायल है, ये ट्रायल है. अच्छा, उसके बाद से हम बबलिंग एरिया जो होता है AC माइनस 2 टाइम्स डाउनकम एरिया, ये हमने निकाल लिया बबलिंग एरिया. फॉर द फर्स्ट ट्रायल कंसिडर द होल डायमीटर. होल डायमीटर कितना होता है ये मैंने आपको एक रेंज दिया था, रेंज याद होना चाहिए आपको. तो होल डायमीटर के लिए हम एक ट्रायल वैल्यू यूज करते हैं, दैट इज 12 mm या हाफ इंच. ओके. एंड उसके बाद से प्लेट थिकनेस इक्वल टू होल डायमीटर सेलेक्टेड फॉर फर्स्ट ट्रायल. हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो प्लेट थिकनेस और होल डायमीटर जो है सेम है, ठीक है. तो अब इसका यूज करेंगे हम, सॉरी,
उसके बाद की बात करते हैं। देखो यहाँ से आगे नहीं स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो अभी तक हमने क्या किया एक्चुअली, स्टेप नंबर हम कहाँ थे, हाँ 5th पे। तो हमने क्या किया कि हमने प्लेट थिकनेस को होल डायमीटर के इक्वल जो है फर्स्ट ट्रायल के लिए, ट्रायल वैल्यू है, ये सारी चीज़ ट्रायल वैल्यू है, हमने जूम किया। अच्छा, उसके बाद से जो 7th स्टेप था हमारा बच्चे, क्या वीपिंग वेलोसिटी को चेक करना। आई एम गोइंग राइट हियर, चेक फॉर, जो 7th स्टेप है दैट इज चेक फॉर वीपिंग वेलोसिटी। और याद होगा वीपिंग वेलोसिटी के लिए मेरे पास एक फार्मूला था। उस फार्मूले में क्या था, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है आपके पास वीप, उसके लिए बच्चे चाहिए होल डायमीटर। होल डायमीटर हमने जूम कर लिया कि होल डायमीटर प्लेट थिकनेस और डेंसिटी आपको मुझे पता ही है, ठीक है। और टॉप पे या बॉटम पे अलग होगा, तो सब चीज़ें दो निकलेंगी, एक तो टॉप के लिए एक बॉटम के लिए, ध्यान रखिएगा। K2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें HW और HW चाहिए, क्योंकि हमें ये निकालना है। और HW HW कहते हैं वियर हाइट, और वियर हाइट जो होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, वियर हाइट निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला, अगर आपको याद होगा, वियर क्रस्ट हाइट निकालने के लिए मेरे पास एक फार्मूला मैंने लिखा था कि दैट इज व्हाट, HWC वियर क्रस्ट हाइट इज इक्वल टू व्हाट, अराउंड इट इज 750, या हमने वहाँ पे लिखा था, दिखा था, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में, वियर क्रस्ट हाइट निकालने का फार्मूला जो भी था इंपेरिकल कोरिलेशन फ्लेयर इक्वेशन से। तो वहाँ से हम निकालेंगे क्या, वियर हाइट, ठीक है। वो दैट इज पैरामीटर ऑफ वियर लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड और लिक्विड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वो सब चीज़ चाहिए होगी। आप लास्ट लेक्चर देखिएगा, वहाँ पे HWC का मैंने फार्मूला बताया था, ठीक है। तो वहाँ से हम HWC निकालेंगे, एंड वंस वी आर एबल टू कैलकुलेट HWC, just wait for a minute. हाँ, अब रही बात वियर हाइट की, तो वियर हाइट जो होगा, जो जितना वियर की हाइट होगी उतनी ही ये भी होगी। तो वियर की हाइट हमने ऑलरेडी एज्यूम किया था, कितना था वियर हाइट, जो पिछला ट्रायल वैल्यू था वहाँ से वियर हाइट एज्यूम किया था मैंने, और इसको ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, ये वैल्यू मिलने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, K2 मिल जाएगा। K2 मिलने के बाद क्या मिल जाएगा मुझे, वीपिंग वेलोसिटी। मतलब अल्टीमेटली आप ऐसे बोलोगे वहाँ पे इंटरव्यू में, बोलेगा तो वीपिंग वेलोसिटी को हम चेक करेंगे। और चेक करने के लिए अगर आपसे पूछता है कि कैसे चेक करोगे, क्या फॉर्मूला, तो आप बोलोगे कि समथिंग पैरामीटर, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, नो नीड टू गो फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, एटलीस्ट यू कैन ड्रॉ दिस फिगर कि दिस K2 एंड दिस इज दिस वीपिंग वेलोसिटी फंक्शन ऑफ K2 and whole diameter and somewhat rho, some empirical relationship is there, and this curve is, this chart is there. On the way of this chart we can able to calculate the वीपिंग वेलोसिटी। इतना टफ, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट स्टिल अगर पूछते हैं तो भी आप इतना, कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट डेटा बताइए, ओनली यू हैव टू आइडिया अबाउट कि हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज, क्लियर है। तो you can use the word called as empirical relationship, empirical equations are there, and by using these empirical equations we can go for and by these charts, ठीक है। इस तरीके से बच्चे हम निकालेंगे क्या, मिनिमम वेलोसिटी वेपर टॉप पे और बॉटम पे, क्लियर है। नाउ एंड जो मिनिमम ऑपरेटिंग वेलोसिटी बहुत इन द टॉप एंड बॉटम सेक्शन इज ऑफ द वीप वेलोसिटी, आपको पता होना चाहिए। जो हमने ऑपरेटिंग वेलोसिटी यूज़ किया था 80% जो यूज़ किया था हमने, वो क्या होना चाहिए, दैट्स खुद चेक करोगे कि क्या मेरा ऑपरेटिंग वेलोसिटी जो है वो इस वीपिंग वेलोसिटी से ऊपर है या नहीं है। अगर दोनों कॉलम में ऊपर है तो मतलब टॉप पे बॉटम पे, तो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री। अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर द we have to change the height, wear length, all the whatever trial value that should be changed actually. Okay, now if it is if operating velocity
which is 80% maximum velocity we have assumed. If it is more than the whipping velocity, then no need to worry about that. Okay, and the next 8th step is that plate pressure drop. अब प्लेट प्रेशर ड्रॉप आपको निकालना है, और प्लेट प्रेशर ड्रॉप के लिए बच्चे आपको पता है कि प्रेशर ड्रॉप तो हमने एज्यूम किया कितना 1.23 अराउंड जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेट. तो एक तो एज्यूम प्रेशर ड्रॉप था, एक हम करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट, एंड वी हैव टू चेक इज इट गोइंग टू मैच विद दिस डेटा और नॉट. जो हमने एज्यूम किया है इन द प्रॉब्लम दे हैव गिवन एंड हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, तो क्या वो दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई विद दिस और नॉट. और नहीं सेटिस्फाई करेगा देन ऑब्वियसली वी टू गो फॉर द प्रीवियस स्टेप्स जहाँ पर हमने वैल्यू को जूम किया हुआ है. तो वी नो दैट जो टोटल हेड होता है क्या होता है बच्चे, एच डी प्लस बीटा टाइम्स एच डब्ल्यू प्लस एच डब्ल्यू. दैट आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट ट्रे प्रेशर ड्रॉप इज दिस. एच डी निकालने के लिए भी मैंने एक क्वेश्चन लिखाई थी, अगर याद होगा आपको, अपॉन सी नॉट स्क्वायर समथिंग यू नॉट स्क्वायर एंड सम कॉन्स्टेंट्स लाइक दैट अपॉन 2g ऐसा कुछ था. वो ध्यान रखना, वो वहाँ से it is a energy loss due to orifice, single orifice coefficient, ये सब यहाँ से निकाल लेंगे हम. अच्छा, बीटा जो होगा दैट इज बीटा इज द एम्पिरिकल फैक्टर. वी कैन कुछ नहीं दिया तो 1 मान के हम चलेंगे. एच डब्ल्यू हमने मान लिया है, एच डब्ल्यू हमने निकाल लिया है, वहाँ से हम निकालेंगे क्या, ट्रे प्लेट प्रेशर ड्रॉप. क्लियर है. तो इस तरीके से हम ट्रे प्लेट प्रेशर ड्रॉप को भी निकालेंगे और चेक करेंगे. वी हैव टू चेक कि इज इट गोइंग टू मैच विद द एज्यूम्ड वैल्यू और नॉट. अगर ये मैच नहीं करता है, अप्रॉक्सीमेटली जो मैक्सिमम एरर होना चाहिए दैट शुड बी अबाउट 5 to 10%. 5-10% error is that, then no need to worry about that. Okay, now so this would be acceptable within the range. So as in this example whatever they have calculated that is 1.25 is given and यहाँ पे आ रहा है 1.25 किलो पास्कल हमने एज्यूम किया था, यानी 127 mm ऑफ वाटर, और यहाँ पे आ रहा है 122, तो नियरली सेम है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल. नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 8th स्टेप में मैंने प्रेशर ड्रॉप को कैलकुलेट कर लिया. 9th स्टेप क्या है, डाउन को बैकअप हम चेक करेंगे. डाउन को बैकअप चेक करने के लिए मुझे क्या बच्चे फॉर्मूला, डाउन को बैक जो जेड होता है, जेड इक्वल टू जेड सी अपॉन 5, याद होगा आपको. जेड सी क्या होता है बच्चे, क्लियर लिक्विड हाइट, एंड दैट इज 2 times एच डब्ल्यू प्लस 2 times बीटा इंटू एच डब्ल्यू प्लस एच ओ डब्ल्यू प्लस एच डी प्लस एच एफ एल. इस तरीके से हम ये एच डब्ल्यू पता है, एच ओ डब्ल्यू पता है, एच डी आपको वही वाला फार्मूला गिवन होगा. एच एफ एल जो फ्रिक्शनल लॉस होता है दैट इज गिवन टू, अदरवाइज 4FLV इसका 1.2 से हम निकाल लेंगे कुछ ऐसा करके. तो वहाँ से क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, 5 होता है 0.5 आपको पता होगा, 50%, जो कि एरिएशन का फैक्टर जो होता है. आई टोल्ड यू क्लियर लिक्विड तो होता है, बट जो एक्चुअली जो कॉलम में लिक्विड इज एरिडेड लिक्विड फ्रोथ होता है, दैट्स व्हाई डेंसिटी ऑफ द फ्रोथ विल बी लो एंड दैट्स व्हाई हाइट विल बी मोर. तो इसलिए हम इस फैक्टर को भी ऐड कर लेंगे. एंड इफ दिस जेड इज जो हमने, इफ दिस डाउन बैकअप इज मोर देन द प्लेट स्पेसिंग जो है तो ठीक है. अदरवाइज इफ जेड इज इक्वल टू और लेस देन वी हैव टू चेंज द प्लेट स्पेसिंग और चेंज द पैरामीटर्स. आर गेटिंग? तो इस तरीके से हम यहाँ पे डाउन को बैकअप भी चेक करेंगे. अच्छा, डाउन को बैकअप चेक करने के बाद से हम दैट आई हैव चेक्ड हियर. एंड देन द लास्ट स्टेप इज द प्रोविजन फॉर द प्लेट डिजाइन. तो ये पूरा हमारा क्रॉस चेक हो गया. अब हम प्लेट की लेआउटिंग करेंगे अल्टीमेटली, कि प्लेट की लेआउटिंग, व्हाट शुड बी द डायमीटर, व्हाट शुड बी द थिंग्स, ऑल द थिंग्स. तो दैट आई विल डिस्कस बाय नेक्स्ट लेक्चर. एक स्टेप बचा हुआ है जो है स्टेप नंबर 10, दैट इज कॉल्ड एज लेआउटिंग ऑफ द प्लेट. तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे. ये आप NPTEL पे डालना, सीधे गूगल डालिएगा कि डिज़ाइन ऑफ प्लेट कॉलम, तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खुल जाएगा. लास्ट में आप नीचे आओगे पेज के करीब मेरे ख्याल से 5-6 पेज नीचे आओगे तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिल जाएगा. वही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैंने यहाँ फॉलो किया है, उसको आप एक बार देख सकते हो सेम. अदरवाइज ऑलरेडी मैंने सब चीज़ आपको बता चुकी हैं, बहुत ईजी होगा समझना, और स्टेप भी आपको अब शायद क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या क्या स्टेप करना है. तो एज योर होमवर्क इज कंसर्न यू हैव टू गो फॉर दिस न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट. नो नीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, बट एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू. ओके, एंड तो जो लास्ट स्टेप, जो 10th स्टेप बचा हुआ है कि कैसे हम प्लेट की लेआउटिंग करेंगे, कैसे नंबर ऑफ होल्स निकालेंगे, दैट आई विल डिस्कस बाय नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर टुडे. एंड वन मोर सेशन हमने क्लास के नोट्स में से ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुकी इन द सेंस कि अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी हमने यहाँ पे कवर कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी नोट्स में है
जैसे कि टाइप्स ऑफ प्लेट एफिशिएंसी, बैच कॉलम एंड एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, मिनिमम बॉलिंग, मैक्सिमम बॉलिंग एजोट्रॉप्स, ऑल द थिंग्स आई हैव गिवन द नोट्स। स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है, और ये सारी चीज़ें नोट्स में है, उसको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा और इसको करने के बाद दैट विल बी ऑल अबाउट योर एंड design, and you are ready for designing the column, and you will ready for give any answer to face any questions based on the design of distillation column. Okay, the only 10th step is there, I will discuss. Thanks for today.